Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं कारोबार विश्लेषक जयंता दास। जयंता, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Jayanta, warm welcome. Thank you very much. और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। India's GDP production grows 4.4% in the third quarter. Country's index of core industries jumps 7.8% in January. Domestic markets decline amid mixed global cues. Sensex and Nifty fall 0.5%. And pan-India 5G coverage will be achieved by the end of next year, says IT Minister Ashwini Vaishnaw. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 4.4% की वृद्धि। जनवरी माह में प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 7.8% का उछाल। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी। सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% गिरे। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 5G दूरसंचार सेवाएं अगले वर्ष के अंत तक पूरे भारत में उपलब्ध होंगी। India's gross domestic production registered a growth of 4.4% in the October-December third quarter of the current fiscal. GDP in the third quarter of 2022-23 is estimated at rupees 40.19 lakh crore as against 38.51 lakh crore in the third quarter of 2021-22, showing a growth of 4.4%, the Union Ministry of Statistics said in a release. For the 2022-23 fiscal, the real GDP is estimated to grow at 7% as compared to 9.1% in 2021-22, the ministry statement said. While nominal GDP for the year is estimated to grow at 15.9%, the statement added. Meanwhile, India's combined index of 8 core industries increased 7.8% in January 2023 compared to 4% in January last year. Fertilizers production registered the highest increase of 17.9% in January, followed by coal production at 13.4%. Electricity generation jumped 12%. Steel production rose 6.2%. Natural gas production increased 5.3%. Petroleum refinery production gained 4.5%. And cement production was up 4.6%. Only crude oil production registered a decline of 1.1% in January. For the April to January period, the 8 core industries registered a growth of 7.9%. Jayanta, how do you read this data where we have seen that the 8 core industries registered a growth of 7.9% and the production of fertilizers, coal, electricity, steel, natural gas, cement and refinery products all increased in January 2023 over the corresponding month of last year? Yeah. How do you read it? So typically, Rajesh, obviously there is a movement forward, but however there is somewhat slowdown in the momentum of the movement. So that's important to understand. While there has been a growth, what needs to be understood is the momentum in that growth to some extent has slowed down, reflective of the figures, which I guess given the triggers of slowdown which happened globally, both because of the Russia-Ukraine war and secondly because of the hike in interest rate
and a tight monetary policy situation followed by almost everyone in the world today. This was to some extent a collateral fallout which was expected. It's not something which is surprising. But important to understand is if you do a third quarter to third quarter reflection, obviously that 4.4, a very modest growth indeed, but nevertheless it happened. So at least we should be to that end doing a checklist. Yes, there has been some movement forward. Taking a cue from here, Rajesh, what needs to be focused right now is to see how the figures for the last quarter turn up. And amidst the fact that between 6.8 to 7% is the GDP which has been forecasted, and supported not only by our own data figures but also internationally by international bodies including IMF. And taking a cue from there, we actually focus on a good momentum jump in the last quarter results. Having said so, what's also important to understand is specifically we are in the almost a mid-session of the last quarter. There has been also some further increased rates which was not expected. There was a rate increase expected nevertheless, but the trigger of a higher rate increase was not expected as it happened. So that should also be taken into account if we are actually focusing on the fourth quarter results, which will be coming in somewhere around, I guess, May or so. But on the whole, what's important to understand is despite the tight monetary policy globally, despite the shrinking of business and trade globally to a great extent, India has been able to keep its head held high up and has been able to go up to the overall trajectories of projections which we had initially. So that's an important point to take away from here. Are we rejoicing the fact or not? Obviously, I guess we are not. But nevertheless, we are doing far better as one of the fastest growing nations till now, given our size. So as I said, if you look at the ladder in the last 3-4 years, we have moved up from 9th position to 5th. And hopefully, if forecasters are to be believed, and if India's present growth projection, if that also is continuously maintaining this, we might surpass Germany by the end of this particular calendar year. So that's an important indicator that the movement has been forward. Are we really rejoicing this forward movement? Obviously not. We would have been expecting better, but then it's a global scenario. You just can't be an ostrich hiding your head in the sand and believing that the world is really doing well and I should do well too. It doesn't happen that way, as we all know. So yes, certainly there's much more headroom to grow from here, but given the present circumstances, we are doing extraordinarily well. जी, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को सरकार ने 7% पर बरकरार बनाए रखा है. इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके पीछे आप मान रहे हैं कि सरकार ने ये जो अनुमान जो है ग्रोथ का ये 7% पर कायम रखा है? देखिए, निर्भर करता है कि इस वक्त आखिरी में जो 6 हफ्ता रह गया, 6 हफ्ता अभी 4 ही हफ्ता रह गया इस आखिरी तिमाही का, उसका प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है. ओवरऑल कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में थोड़ा नरमी आया हुआ है. इसका ब्याज दर का जो वृद्धि हुआ है उसका सीधे असर इसके ऊपर भी दिख रहा है. काफी सारे बड़े डील्स जो है, ये ब्याज दर का वृद्धि का वजह से उस डील्स को रिकैलिब्रेट किया जा रहा है कि किस दर में होगा या प्रोजेक्ट टेक ऑफ होगा कि नहीं होगा. गवर्नमेंट का विनिवेश का जो टारगेट है इस साल का, उसमें भी एक अलग से एक कहीं ना कहीं एक इरोजन हो सकता है. जो उम्मीद शायद हम कर रहे थे उसमें शायद ना हो पाए. लेकिन अगर आंकड़े के तौर से बात करें, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जहां पे हम अलग से चिंतित हो कि से फॉर एग्जांपल हम लोग 9% उम्मीद कर रहे थे, 6% हम परफॉर्म कर रहे हैं. मैं मानता हूं कि रिकैलिब्रेशन ऑफ जीडीपी का ग्रोथ का जो फिगर्स आया हुआ है और साथ में आईएमएफ या बाकी सब जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनका द्वारा भी जो एक ओवरऑल एस्टिमेट्स प्रोजेक्शंस है, उस प्रोजेक्शंस के दौरान अगर 6.8% से लेके 7 तक अगर हम सीमित रह पाए अपना आपको, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, काफी अच्छा इस मौजूदा स्थिति में विश्व स्थिति जो होके रखा है, काफी अच्छे माना जाएगा प्रदर्शन. लेकिन हमें ये भी समझना है कि इससे भी गिरने का उम्मीद हो सकता है अगर कुछ घटना ऐसे घटे जहां पे ज्यादा नुकसान हमें पहुंचे, खास करके पॉलिटिकली विदेशी जो बाजारों है. देश का बात मैं नहीं कर रहा हूं. जब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, मैं जियो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में बात कर रहा हूं. हमें ये भी समझना है कि जनवरी में एक कोविड का 3 हफ्ता का खतरा चाइना में बहुत
बुरी तरह से आया हुआ था, जहां पे कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, जिस वजह से ग्लोबल ट्रेड में फर्क पड़ा, उसका असर भी हमारा देश का आंकड़े में कहीं ना कहीं आके प्रदर्शन करेंगे। और जनवरी आपको पता है कि आखिरी तिमाही का पहला महीना था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत असर शायद आंकड़े में हो सकता है। हमें नहीं पता इस वक्त कितना असर होगा, लेकिन वो सारी चीजें भी हम अगर डिस्काउंट करके चले तो जैसे मैंने कहा 7% अगर जैसे इनिशियल प्रोजेक्शंस था उसका साथ अगर वो मीट कर पाता है एक्चुअल फिगर्स, बहुत अच्छी बात रहेगा। You know, there is a poll of economists and they had predicted that a slowdown in India's economic growth for the third quarter is primarily due to the interest rate hike. Absolutely. You that's also what, upon that. I was not part of the poll, but nevertheless I don't think, I mean, see, economics tend to go overboard. I myself also professional economist. You don't need to have a poll on this, obviously. I mean, it's almost everyone in the streets. I think almost most of our listeners also would be knowing that the interest rate has been a major dampener in India's growth story, and we can't just ignore it, you know. So. Okay. What about the consumer demand, Jayant? There's a slowdown that's been observed in the consumer demand. How do you see that, you know, now that the GDP figure of 4.4 versus the slowing of the consumer demand? See, you cannot rubbish or damn consumer demand getting slowing down. For the very reason was interest rates were increased to try to curb down the demand so that we don't have a runaway inflation. So, if I ask a reverse question to ourselves over here in this discussion which we're having now, has inflation been controlled by rate hikes? Yes, to some extent, reflective of the fact that consumer demand has been controlled or has fallen down to some extent. Although in US markets this has not happened though. I mean, as a result of which, the US central bank governor himself has pointed out that, there were really strong demand surges happening despite job losses and things like that. So, in terms of India, obviously, there has been sluggishness, if not a drop, in a lot of the product industry. FMCG to start with, yes, they are the first to bear the brunt. But a lot of sectors are yet to face the brunt of rising interest rate and prices. We were discussing last week over here the auto sector, for example. I don't see any reprise from the huge demand which the auto sector is enjoying at this point of time. With the wait listed of cars, obviously to some extent is because of the chips are not coming in time, although they have started now coming back once again to the market. But despite that, there are waiting periods in our country from 12 to 14 months of many car models. So which speaks that there is an inherent demand existing for a lot of sectors. But although on the whole, for example in the infrastructure sector, with the huge projects with the government plans, there is no respite in the demand. I mean, demand is there and is consistently there, sitting on your heads in terms of growth. But a lot of sectors, as you rightly said, are reflecting, are started seeing scenes, and this is obviously a natural way of how a rise in interest has brought in some curb in demand. Otherwise, God forbid, we would have a runaway inflation. So this is a demand push, fall which is we're going to witness. Whether inflation has been controlled or not, I think the figures are coming in weekly, and that's an important study and discussion which also we need to understand. I don't think inflation is getting controlled very soon. It will be reined in, but I don't think it's going to get controlled at least in the next 3-4 months. Reflective of the fact that most central government banks, most central banks world over have believing the view that they think that this is going to lengthen a bit more than having a, should I say, an autumn closure of the interest rate peak being reached and a plateau being, So most of the people are saying it's either going to be 6.8, 6.9. The government today said 7% growth in GDP. See, where are you on this? As I said, neither would I. I don't do a data study in terms of across industries and all. I mean, between you and me and Vishal over here is just an armchair guess. So I won't lose my sleep even if it's 6.7 or even if it's 7. What we have to understand is if you're doing a performance within a band, anything above 6.6 to 7 I think is a fantastic performance given today's global scenario. जी, ये जो महंगाई में और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो पूरी दुनिया में एक तरीके का जो एक चक्र, एक साइकिल चली है, क्या ये रिवर्स होने की हम इसकी उम्मीद कब से कर सकते हैं? देखिए, वही मैं बात थोड़ी देर पहले कहा रहा था विशाल के आप अगर जैसे कहा जा रहा था कि शायद अगस्त सितंबर से एक रिवर्स ट्रेंड, यानी कि ये नहीं कि गिरना शुरू हो जाएगा, एक प्लेटो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे जहां से उसके बाद फिर एक फॉल होने को शुरू होता है.
तो वो स्थिति अब बनने में थोड़ा और समय शायद लग सकता है। लेकिन ये भी हमें समझना है कि ग्लोबल स्लोडाउन अगर ज्यादा जल्दी आता है तो किसी न किसी तरह से ये जो स्टेज का हम बात कर रहे हैं, जो माइलस्टोन का बात कर रहे हैं, जहां पे फिर से इन्फ्लेशन जाके गिरना शुरू होगा, शायद वो थोड़ा सा और पहले आ जाए। उम्मीद ये हो रहा है सो दैट वी कैन ऑल कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लो डाउन फेज। लेकिन टिपिकली ये साइकिल्स होता है 3 साल का चढ़ने गिरने का, और ये साइकिल अगर आप पिछले 50 साल का हिस्ट्री लेके चले, ये कहीं ना कहीं प्ले डाउन करता है साइकिल, ऑलमोस्ट एक ट्रेन के साथ जी। तो अब निर्भर करता है कि वो 6 महीना और चले या 3 महीना और चले, वो तो बातों बातों में हम एक दूसरे के साथ आंकड़े के साथ हम बहस भी कर सकते हैं, आर्गू भी कर सकते हैं, अच्छे से उसमें टिप्पणी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस साल सितंबर से अक्टूबर तक हम उम्मीद ये बेशक कर सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का जो सिनारियो बने हुए, हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग होम लोन्स लिए हैं, हम लोग कार लोन्स लिए, ये स्थिति बने रहेंगे। तो इसमें आपको छूट पाना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझना है कि इस वक्त अगर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी अच्छा रहे और मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी आता है इस वक्त, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर ना करके अगर एज अ रिटेल हाउस होल्ड पर्सन जो अपना इनकम टैक्स भरता है, दिना में अपना रोजे जोटी नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, उनको थोड़ा सा शायद एक कुशनिंग हो, हेजिंग हो, स्टॉक मार्केट में जाकर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमा ले इस वक्त। Very briefly, what is your hypothesis of the market? Everybody thought that the inflation is peaking out, but the data that's coming out in the US and in India is stating otherwise. Absolutely. So that's the whole idea, because if I go back and pick up a FOMC report as early as say January 2022, almost 13 months ago, they always speak of a lovely cycle which says that this will continue till June 2023 with some 6 or 7 overall jumps and rise of around 3 to 4% or 5% in the inflation rate and things in the interest rate. Sorry. But now, sitting in March, almost starting of March, the viewpoint is going to get extended. And if you ask me, as I said, it's a twin thing, because it depends on how fast the recession sets in. And that could be a trigger of prices to start falling again, which could be a trigger further for interest rates hike to be controlled. So it's all interlinked. And obviously we need to see and wait and watch. But the general mood right now globally is this interest rate trigger of at higher levels is going to remain a few months longer than what was initially expected about 1 year back. So I'm trying to interpolate and trying to tell you, but the very reason is none of us has basic numbers in our hand, including the central bank governors. अब रुख करते हैं शेयर बाजारों का। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 59,000 के निशान से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,300 के नजदीक बंद हुआ। सेंसेक्स 0.6% के नुकसान से 326 अंक लुढ़ककर 58,962 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.5% के नुकसान से 89 अंक गिरकर 17,304 पर आ गया। व्यापक बाजार का प्रदर्शन हालांकि सेंसेक्स से बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.6% का उछाल आया और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% लाभ में रहा। Domestic markets declined today in a volatile trade amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended below the 59,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled around the 17,300 level. The Sensex fell 326 points or 0.6% to end at 58,962. The Nifty shed 89 points or 0.5% to close at 17,304. In the broader market, outperforming the Sensex, the BSE Mid-Cap Index jumped 0.6% and the Small Cap Index gained 0.4%. In the Sensex pack of 30 companies, 10 companies rose while 20 ended in red. Among the gainers, Asian Paint was the top performer with a rise of 3%, followed by M&M at 1.8%. Among other gainers, HDFC and Tata Motors advanced 0.7% and Kotak Bank added 0.2%. Among the losers, Tata Steel and Reliance declined the most with a loss of 2%, followed by Bajaj Finserv at 1.8%. Titan and Tech Mahindra dipped
1.1% each, and ICICI Bank lost 0.2%. Among the BSE sectoral indices, BSE Metal Index declined the most at 2.4%, Oil and Gas Index tumbled 1.4%, Healthcare Index dipped 0.9%, IT Index fell 0.8%, the FMCG and the Banking Indices lost 0.2% each. Among the gainers, the Realty Index was the top performer with a jump of 1.2%, the Power Index advanced 0.9%, the Telecom Index gained 0.6%, the Auto Index added 0.5%, and the Capital Goods Index was up 0.2%. और रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 17 पैसे मजबूत होकर $82.66 के स्तर पर बंद हुआ। जनता शेयर बाजार की बात करें तो लगातार 8वें कारोबारी सत्र में आज गिरावट रही है, 59,000 से नीचे आ गया है। किस दिशा में ज्यादा दिखाई पड़ रहा बाजार? देखिए, इस वक्त मैं मानता हूं कि नरमी बरकरार रहेंगे बाजार में, खास करके कॉर्पोरेट रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है, एंड आई डोंट सी अ ह्यूज शाइनिंग स्टार इन मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैपनिंग। सो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो स्थिति बने हुए है, बेशक बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ वैल्यू बाइंग भी आते रहेंगे। मार्केट में थोड़ा बहुत ज्यादा डीपनिंग अगर होगा इस तरह का गिरावट, तो वैल्यू बाइंग काफी अच्छे स्टॉक्स इस वक्त मैं मानता हूं कि काफी सस्ते में मिल रहे हैं, और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि निवेशक कोशिश करेंगे वैल्यू बैंक सर्च करने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि भाई अगले 4-6 हफ्ते में मार्केट में एक अलग से दौर आ जाएगा सेंसेक्स का, मैं नहीं मानता हूं। वजह इसलिए कि जब तक पूरा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सारे नतीजे ना आ जाए आगे, एक थोड़ा बहुत मार्केट में इस वक्त जो स्थिति बना वो बने रहेंगे। अच्छी बात ये रहेगा कि अगर बिटवीन 58 to 60,000, मैं पिछले हफ्ता भी बताया था इसी प्रोग्राम में, 58 से 60 का बीच में अगर सेंसेक्स रेंज बाउंड भी रहता है, जहां पे जब भी 57-58 लेवल्स पहुंचता है वहां पे वैल्यू बाइंग के द्वारा मार्केट में थोड़ा बहुत और तेजी आ जाता है, तो अच्छा प्रदर्शन मार्केट में इस वक्त रहेगा। तो आपका जो भी निवेश है इस वक्त साल का, मतलब वित्तीय साल का अंत में आप लोग है, और इस वक्त लोग टैक्स प्लानिंग वगैरह भी करते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर पैसा आपके पास बचा हुआ है तो इस वक्त मार्केट में अच्छा क्षेत्र में कुछ वैल्यू बैंक बेशक कर सकता है। ये ध्यान रखते हुए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, बिकॉज शॉर्ट टर्म में इस मार्केट में आपको बहुत ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा घाटा भी हो सकता है। तो रिस्क कैपिटल का बहुत तेज रहे तो बेशक करें, लेकिन एक साल 1.5 साल का अवधि लेके अगर आप निवेश करते हैं इस मार्केट में, तो इस मार्केट से शायद आप 11-12% तक रिटर्न बेशक ले सकते हैं अच्छा स्टॉक्स के ऊपर। Briefly, overall market, as far as overall market is concerned, we lack triggers. Yeah. We thought that budget was a trigger that was coming our way. What is it that will motivate the market or bring the sentiments back? Well, see, as an investor, if you're waiting for triggers to depend or plan your investments, I think you're one of the most wrong place ever. So what's important to understand is the only trigger in your investment policy should be a risk appetite. That's the first trigger we should look to, how much of risk I'm ready to take and what returns I'm expecting. If you drive your both selling and buying based on that trigger, you can make a healthy profit out of the market. If you wait for policy triggers, or if you wait for triggers from friends through insider news and all, I mean, it's a very difficult call, then you're in a very risky zone. You should not be in the market as a stable investor at all. So, in a short, that particular manner. But, I also have an important point to make further over here. Markets, people are there in the markets because people are greedy as an investment community. It's not an accusation, it's how our nature is, and that's what drives market. So, it's because of this greed, markets, either crash or they rise. So, if you're able to predict those particular crashes and rises, you'll be a superstar, super champ in this particular market. But for most of us, I think it's important to understand our trigger is not look for policy triggers and all, but look for long-term performances, look for where your risk appetite is, and look for what your expectations from the stock market in terms of returns are. जी, और अब रुख करते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजार आज मिले जुले कारोबार के साथ बंद हुए। जापान का निकेई 0.1% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% की बढ़त में रहे। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट बंद हुआ, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई।
यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्देशीय कारोबार में गिरावट में चल रहे थे। लंदन के FTSE 100 में 0.6% की गिरावट दिख रही थी। फ्रांस का कैक 0.4% लुढ़क गया और जर्मनी का डेक्स 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। जर्मनी में 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड का प्रतिफल 7 आधार अंक बढ़कर 2.66% पर पहुंच गया है। ये जुलाई 2011 के बाद सबसे उच्चतम स्तर है। फ्रांस और स्पेन में भी बॉन्ड प्रतिफल कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। U.S. markets eked out gains yesterday as investors engaged in some bargain hunting after last week's heavy losses, but they remain concerned about the Fed interest rate hikes. The Dow Jones Industrial Average rose 72 points or 0.2% to 32,889. The S&P 500 gained 12 points or 0.3% to 3,982, and the Nasdaq Composite added 72 points or 0.6% to 11,467. And global crude oil prices rose today, erasing the previous session's losses as hopes for a solid economic rebound in China offset worries about further U.S. interest rate hikes dragging on consumption in the world's biggest economy. Brent crude oil futures rose 87 cents to $83.32 per barrel. U.S. crude oil futures gained $1.18 to $76.89 a barrel. और कीमती धातुओं पर की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए सोने की कीमत में आज 250 रुपये की गिरावट आई। सोने का भाव 55,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 160 रुपये टूटकर 62,800 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना कमजोरी के साथ $1,817 प्रति औंस, जबकि चांदी $20.67 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने कहा है कि पूरे भारत में 5G सेवाओं का लक्ष्य अगले वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि अब तक देश के 387 जिलों में 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष मार्च के अंत तक 200 शहरों को 5G सेवा के लिए शामिल करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ये लक्ष्य से 1 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दूरसंचार उपकरणों के अग्रणी निर्माता और निर्यातक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का मोबाइल निर्यात $10 अरब हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि वैश्विक कंपनियां देश के दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं। जयंता, 5G सेवाओं का जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे देश भर में अब ये अगले साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बदलाव आप देखेंगे हम दूरसंचार क्षेत्र में भारत की जब 5G सेवाएं पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगी? ये एक वे फॉरवर्ड है। आई मीन अगर आप ऐसे क्षेत्र में हो दुनिया भर में जहां पे आपको ये इंटीग्रेशन मजबूरन करना पड़ेगा बेशक, और हमें ये समझना है कि देश में अगर हम डिजिटल इंडिया का बात कर रहे हैं और 2024-2026 तक डिजिटल इंडिया कन्वर्जेंस का बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि सरकार और जो भी निजी कंपनी टेलीकॉम क्षेत्र में है मिलजुल के इसको आगे बढ़ाए। लेकिन साथ में ये भी जरूरी है उपभोक्ता के तौर से उसका भी जो दर है एक्चुअल यूजेज चार्जेस जिसको बोलते वो भी हम पूरा करें। अगर आप अभी भी 199 रुपीज में अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉल्स का अगर आप सोच रहे, बेशक शायद वो ना हो पाए, बिकॉज आई थिंक आज एयरटेल का जो मुखिया है उन्होंने भी बताया कि भाई अगर आपको अच्छा सर्विसेज चाहिए और 5G जैसा बेहतरीन सुविधा का अगर आप उपलब्ध कर सकते हैं तो आपको जरूरी है कि ये समझना कि इसमें दरों में भी बेशक फर्क पड़ेगा। और एज अ नेशन वी शुड गेट रेडी, क्योंकि हम लोग अभी वर्ल्ड का वन ऑफ द लोएस्ट टेलीकॉम चार्जेस हम देते हैं, तो बहुत जरूरी है ये भी समझना कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी का साथ साथ दर भी है, उसमें भी थोड़ा वृद्धि होगा। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन द कमिंग डेज vis-a-vis the market? In the stock market? Yes. You brought me back to the discussion. Yes. See, what I taking your view in the coming, for the coming days. As I said, the next 3 to 4 weeks till the end of the fiscal year, I don't expect much price or growth in terms of stock market jumping around. I completely agree, and I'll take a very normal view of the market to be range bound between 57 levels to 60-61 levels, not beyond that. 4,000 is a huge range, but I do believe there will be dips and there will be good value buying also happening in between this week. Okay, and what about the heightened expectations that the Fed will continue to be aggressive in raising interest rates? Very, very briefly. So that's not going to be wiped off so soon, as I said. It is going to continue till September, October. जी, जयंत दास आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी चर्चा आपने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। Thank you, Jayanta, for being with us. And before we close, the headlines once again. India's GDP production grows 4.4% in the third quarter. Country's index of core industries jumped 7.8% in January.
Domestic markets declined amid mixed global cues. Sensex and Nifty fall 0.5%. And pan-India 5G coverage will be achieved by the end of next year, says IT Minister Ashwini Vaishnaw. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.